Good morning, students. This is for mathematics, class 3rd, chapter 1 division. This is our lecture number 6. Topics to be covered. Exercise 1E. Find the quotient and remainder and verify the answer. Exercise 1G. Word problem. Exercise 1E. Find the quotient and remainder and verify the answers. Part I 506 divided by 5. बेटा हमें 506 को 5 से डिवाइड करना है ओके और हमें क्या बताना है वी हैव टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर क्वोशंट और रिमाइंडर बताना है और हमें अपने आंसर को वेरीफाई करना है मीन्स चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है ओके लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन बेटा दिस 506 is our dividend and 5 is our divisor okay here in 506 this 6 is at 1's place 0 is at 10's place 5 is at 100's place we have to divide this 100's place digit 5 by 5 हमें इस 5 को 5 से डिवाइड करना है 5 divided by 5 equal to 1 5 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है 1 so we will write 1 here in the quotient and 5 here below 5 5 के नीचे हम 5 लगा देंगे नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट अब हम 5 में से 5 को माइनस करेंगे 5 minus 5 equal to 0 राइट 0 हियर नाउ ब्रिंग डाउन दिस 0 अब हम इस 0 को नीचे लेके आएंगे नाउ वी विल डिवाइड दिस 0 बाय 5 0 divided by 5 equal to 0 right 0 here in the quotient and 0 here below this 0 इस 0 के नीचे भी हम 0 लगा देंगे now we will subtract it 0 minus 0 equal to 0 right 0 here now bring down this 6 which is at 1's place इसको हम नीचे लेके आएंगे okay we will write 6 here now we have to divide this 6 by 5 ओके अब बेटा हमें इस 6 के नीचे वो नंबर लिखना है 5 की टेबल में से विच शुड बी लेस देन 6 और इक्वल टू 6 बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6 सो दैट नंबर इज 5 1 द 5 5 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है 1 सो राइट 1 हियर इन द क्वोशंट एंड 5 हियर बिलो 6 6 के नीचे हम 5 लगा देंगे now we will subtract it 6 minus 5 equal to 1 right 1 here now beta our quotient is 101 and remainder is 1 now we will verify the answer for verification you have to learn and write this formula dividend equal to divisor multiply by quotient plus remainder here beta our dividend is 506 divisor is 5 okay quotient is 101 and remainder is 1 okay now beta see dividend 506 equal to 5 5 is our divisor multiply by 101 101 is our quotient plus 1 is our remainder बेटा अब हम 101 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सी we have to multiply 101 by 5 5 1 the 5 right 5 here 5 0 the 0 right 0 here 5 1 the 5 right 5 here बेटा जब हमने 101 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 505 अब इस 505 में हम इस 1 को प्लस कर देंगे सी 505 plus 1 equal to 506 now beta our answer is after verification 506 and dividend is also 506 so 506 equal to 506 our answer is equal to dividend same है बिल्कुल dividend और हमारा answer it means our sum is correct hence verified
Clear beta? Find the quotient and remainder and verify the answer. Part J 5005 divided by 2. 5005 को हमने किससे डिवाइड करना है? 2 से. Okay, let's start with solution. Here beta 5005 is our dividend and 2 is our divisor. In 5005, this 5 is at 1's place, 0 is at 10's place, this 0 is at 100's place and this 5 is at 1000's place. We have to divide this 1000's place digit 5 by 2. हमें इस 5 को किससे डिवाइड करना है? 2 से. और बेटा हमें इस 5 के नीचे 2 की टेबल में से वो नंबर लिखना है that should be less than 5 or equal to 5 but it should not be greater than 5. Okay, so that number is 2 to the 4. 4 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 2. So write 2 here in the quotient and 4 here below 5. 4 हम कहाँ लिख देंगे? 5 के नीचे. Now we will subtract it. 5 minus 4 1. Write 1 here. Now bring down this 0 which is at 100's place. इस 0 को हम नीचे लेके आएंगे. Okay, अब ये दोनों नंबर मिलकर क्या बने? 10. Now we have to divide this 10 by 2. 10 divided by 2 equal to 5. 10 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 5. So write 5 here in the quotient and 10 here below 10. 10 के नीचे हम 10 लिख देंगे. Now we will subtract it. Okay, 10 में से 10 को हम माइनस करेंगे. 0 minus 0 0. Write 0 here. 1 minus 1 0. Write 0 here. Now bring down this 0. अब हम इस 0 को नीचे लेके आएंगे. We will write 0 here. Now we have to divide this 0 by 2. 0 divided by 2 equal to 0. So write 0 here in the quotient and 0 here below 0. हम यहाँ 0 के नीचे 0 लगा देंगे. Okay, now we will subtract it. 0 minus 0 0. Write 0 here. Okay, now bring down this 5 which is at 1's place. इसको हम नीचे लेके आएंगे. Okay, see, we will write 5 here. Clear? Now we have to divide this 5 by 2. ओके, अब बेटा हमें 2 की टेबल में से 5 के नीचे वो नंबर लिखना है which should be less than 5 or equal to 5 but it should not be greater than 5. So that number is 2 to the 4. 4 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 2. So write 2 here in the quotient and 4 here below 5. 5 के नीचे हम 4 लिख देंगे. Now we will subtract it. 5 minus 4 1. Write 1 here. Okay. Now beta 2502 is our quotient and 1 is our remainder. Now we will verify the answer. अब हम आंसर को वेरीफाई करेंगे. For verification you have to learn and write this formula. Dividend equal to divisor multiply by quotient plus remainder. Okay, so here beta dividend is 5005, divisor is 2, quotient is 2502 and remainder is 1. See, 5005 it is our dividend equal to 2 is our divisor multiply by 2502. 2502 is our quotient plus 1 is our remainder. अब हम 2502 को 2 से multiply करेंगे. See, we have to multiply 2502 by 2. Okay, 2 to the 4. Write 4 here. 2 0 the 0. Write 0 here. 2 5 the 10. Write 0 here and carry 1 here at thousands place above 2. Okay. Now we have to multiply this 2 by 2. 2 to the 4 plus carry 1. 5. Write 5 here.
अब जब हमने 2502 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया बेटा 5004. नाउ वी विल ऐड दिस 1 इन 5004. अब 5004 में हम 1 को प्लस कर देंगे. ओके, सो आवर आंसर इज 5005. 5004 plus 1 equal to 5005. Now our answer is 5005. Our answer after verification is 5005 and dividend is also 5005. 5005 equal to 5005. It means our sum is correct. Both numbers are same. Hence verified. Clear? Part K 2108 divided by 6. पार्ट के में बेटा हमें 2108 को 6 से डिवाइड करना है एंड वी हैव टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर. और हमें क्या बताना है क्वोशंट और रिमाइंडर एंड वेरीफाई द आंसर. और हमें आंसर को वेरीफाई करना है मीन्स चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है. Okay, let's start with solution. Beta 2108 is our dividend and 2 is our divisor. Here in 2108, this 8 is at 1's place, 0 is at 10's place, this 1 is at 100's place and this 2 is at 1000's place. We have to divide this 1000's place digit 2 by 2. हमें इस 2 को 2 से डिवाइड करना है. 2 divided by 2 equal to 1. Write 1 here in the quotient and 2 here below 2. हम इस 2 के नीचे 2 लगा देंगे. Now we will subtract it. 2 minus 2 equal to 0. Write 0 here. Okay. Now bring down this 1. अब इस 1 को हम नीचे लेके आएंगे. We will write 1 here. Okay, now we have to divide this 1 by 2. हमें इस 1 को 2 से डिवाइड करना है. बेटा we can't divide 1 by 2 क्योंकि ये 1 छोटा है और ये 2 बड़ा है. Now we will divide it by 0. 0 divided by 2 equal to 0. So we will write 0 here in the quotient and 0 here below 1. 1 के नीचे हम 0 लगा देंगे. Now we will subtract it. 1 minus 0, 1. Write 1 here. Now bring down this 0 which is at 10's place. इसको हम नीचे लेके आएंगे. We will write this 0 here. अब ये दोनों नंबर मिलकर क्या बने बेटा 10. Now we have to divide this 10 by 2. 10 divided by 2 equal to 5. We will write 5 here in the quotient and 10 here below 10. और हम 10 के नीचे 10 लगा देंगे. Clear बेटा? Now we have to subtract. 0 minus 0, 0. Write 0 here. 1 minus 1, 0. Write 0 here. Now we have to bring down this 8 which is at 1's place. इसको हम नीचे लेके आएंगे. We will write 8 here. Now we have to divide this 8 by 2. अब हमें इस 8 को 2 से डिवाइड करना है. Okay? 8 divided by 2 equal to 4. Write 4 here in the quotient and 8 here below 8. हम 8 के नीचे 8 लगा देंगे. 8 minus 8 equal to 0. Write 0 here. Okay, our quotient is 1054 and remainder is 0. Clear beta? Now we have to verify the answer. For verification, you have to learn and write formula dividend equal to divisor multiply by quotient plus remainder. Here our dividend is 2108, our divisor is 2, quotient is 1054 and remainder is 0. See, our dividend is 2108 equal to 2. 2 is our divisor. Multiply by 1054. 1054 is our quotient. Plus 0. 0 is our remainder. अब हम बेटा 1054 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे.
See, 1054 multiply by 2. Okay, 2 for the 8, right? 8 here. 2 5 the 10, right? 0 here and carry 1 here at hundreds place above 0. 0 के ऊपर हम carry 1 लगा देंगे. Now we will multiply this 2 by 0. 2 0 the 0, 0 plus 1, 1, right? 1 here. Okay, now we have to multiply this 2 by 1. 2 1 the 2, right? 2 here. Okay, जब हमने 1054 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 2108. नाउ वी विल ऐड दिस 0 इन 2108. हम 2108 में 0 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2108 which is equal to dividend. It means our sum is correct. See, our dividend is 2108 and our answer after verification is 2108. Both numbers are same. It means our sum is correct. Hence, verified. Clear beta? Understood? Exercise 1G. Solve the following. Question number 1. Rohini has 100 stamps. She wants to paste 5 stamps on one page. How many pages are needed to paste all the stamps? First of all, beta, I will tell you Hindi of this given question. Okay? रोहिणी के पास 100 स्टैम्प्स हैं और वो एक पेज पर 5 स्टैम्प्स पेस्ट करना चाहती है. ओके, सो हाउ मेनी पेजेस आर नीडेड टू पेस्ट ऑल दी स्टैम्प्स. उसको सभी स्टैम्प्स को पेस्ट करने के लिए कितने पेजेस की जरूरत है. सो व्हाट विल वी डू हियर इन दिस क्वेश्चन? वी विल डू डिवीजन हियर. सो वी विल डिवाइड 100 by 5. Okay, see solution. Okay, now we will divide this 100 by 5. Okay, so here in 100, 0 is at 1's place, this 0 is at 10's place and 1 is at 100's place. Now beta, we have to divide this 100's place 1 by 5. But this 1 is smaller than 5. We can't divide it. हम इस 1 को 5 से divide नहीं कर सकते क्योंकि 1 छोटा है और 5 बड़ा है. Then we will take this 10's place digit which is 0. हम इस 1 के साथ इस 10's place digit 0 को भी ले लेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बने बेटा 10. Now we can easily divide this 10 by 5. Okay, 10 divided by 5 equal to 2. 10 5 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है 2. So we will write 2 here in the quotient and 10 here below 10. 10 के नीचे हम 10 लगा देंगे. Okay, now we will subtract it. अब हम 10 में से 10 को माइनस करेंगे. 10 minus 10 equal to 0. Write 0 here. Okay, now bring down this 0 which is at 1's place. इसको हम नीचे लेके आएंगे. Okay, see, we will write 0 here. Okay, now we have to divide this 0 by 5. Okay, 0 divided by 5 equal to 0. Write 0 here and in the quotient and 0 here below 0. 0 के नीचे हम 0 लगा देंगे. Now we will subtract it. 0 minus 0 equal to 0. So we will write 0 here. Now beta, how many pages are needed
to paste all these terms 20. Okay, 20 pages. Answer is 20 pages. So we will write here answer 20 pages. Clear? Now beta, today's homework is do exercise 1E, find the quotient and remainder and verify the answer. Part L, 5682 divided by 5. आपको पार्ट एल नोटबुक में करना है. पार्ट एल में यू हैव टू डिवाइड 5682 by 5 और आपको क्या बताना है? यू हैव टू फाइंड द कोशेंट. ओके बेटा, एंड रिमाइंडर, और आपको वेरीफाई भी करना है आंसर्स को. क्लियर बेटा? अंडरस्टूड? Now beta, we will discuss homework solutions exercise 1E which I had assigned in the previous lecture. Find the quotient and remainder and verify the answer. हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर बताना है और आंसर को वेरीफाई करना है, मीन्स चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है. पार्ट सी 71 डिवाइडेड बाय 7. ओके, हमें 71 को 7 से डिवाइड करना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन. 71 is our dividend and 7 is our divisor. Here in 71, 1 is at 1's place, 7 is at 10's place. We have to divide this 7 by 7. Okay, 7 divided by 7 equal to 1. So we will write 1 here in the quotient and 7 here below 7. हम 7 के नीचे 7 लिख देंगे. 7 minus 7 equal to 0. Write 0 here. Now bring down this one which is at 1's place. इस 1 को हम नीचे लेके आएंगे. We will write 1 here. Now we have to divide this 1 by 7. But beta, we can't divide 1 by 7 क्योंकि 1 छोटा है और 7 बड़ा है. So what will we do now? अब हम क्या करेंगे? We will divide it by 0. 0 divided by 7 equal to 0. Write 0 here in the quotient and 0 here below 1. 1 के नीचे भी हम 0 लगा देंगे. Clear बेटा? 1 minus 0, 1. Write 1 here. Okay, our quotient is 10 and remainder is 1. Now we will verify the answer. For verification, you have to learn and write this formula. Dividend equal to divisor multiply by quotient plus remainder. Okay, dividend is our 71, divisor is 7, quotient is 10 and remainder is 1. See, dividend is 71 equal to 7. 7 is our divisor. Multiply by 10. 10 is our quotient plus 1. 1 is our remainder. Okay. Now, we have to multiply 10 by 7. Okay. हमें इस 10 को 7 से मल्टीप्लाई करना है. 7 10 दा 70. ओके, और 70 में हम 1 को क्या कर देंगे? प्लस. क्लियर बेटा? 70 प्लस 1 इक्वल टू 71. ओके, सो आवर आंसर इज इक्वल टू डिविडेंड. हमारा डिविडेंड क्या है? 71 एंड आवर आंसर आफ्टर वेरिफिकेशन इज 71. बोथ नंबर्स आर सेम. इट मीन्स आवर सम इज करेक्ट. हेंस verified. Understood? Have you checked this part C which I assigned in homework? Okay, thank you.